I hope you all are able to see my screen. Okay, so you all are able to see my screen. Thank you, Ms. Rahila. So, today's session is about the autopiloting brain and how the mental shortcuts are actually shaping our daily classroom decisions. So, any idea what it is about? Anyone who would like to share that what the session is about? Yeah, what you are perceiving, that what we are going to take away from today's session. Anyone? You can also write in the chat box. It is related to what? Like, is it related to any subject or what? Yes, it is related to brains. Now, before starting, let's try something. Can you all fold your arms quickly? Okay. Can we all fold our arms? Are we done? Then show me thumbs up. Are we done? Okay. So, now unfold your arms and let's try step 2. Now you have to fold your arms in an opposite way. Can we all do it? Now you have to fold your arms in an opposite way. Okay, so I got okay, mental shortcuts. Okay, related to critical thinking. Okay. Now, how many of you are done with the second step? How many of you were able to fold their arms in an opposite way? Anyone? See, the session is going to be more interactive if we are going to participate. How many of you were able to fold their arms in an opposite way? Were we able to or were not able to? A little bit difficult. Okay. So, my next question was the same. Then, how did it feel? How does it feel to you? So, it was a little bit difficult. Can you tell me why it was a difficult? And not the first step was not difficult, but the second step was difficult. Why? Any guesses? A little bit confusing. Okay, thank you, Miss Seema. So why it was a little bit difficult or a little bit confusing? Backside you were able to do it, okay? Because you have to think. Because it requires thinking. Exactly. And in the first step, the thinking was not required. In the first step, the thinking was not required because we are habitual of doing folding our arms. But when we are asked to do something which is for we are not habitual, so we need to think. Our brains are actually designed in this way. And we have a Nobel Prize winning psychologist who wrote in his book, Daniel Kahneman, that brain is designed in two systems, system 1 and system 2. System 1 is fast. System 2 is slow. It needs time to process. In system 1, it is automatic. I'm going to explain it once I'm going to connect it. The system 2 is deliberate. We think.
System for one is habitual. System two analyze the stuffs. And that's why it is deliberate and it takes time. It is slow. System one is effortless. We don't require time, we don't need any efforts. But the system two, we need to put in effort because we are thinking. So when we fold our arms in our first step and when we fold our arms in the second step, which system was used in the second step? Can you make guess? When we were folding our arms in an opposite way, which system actually we used? System 1 or system 2? Exactly, Ms. Zubia, Ms. Seema, system 2. Ms. Zakia, thank you. Why? Because our brains are not patterned, are not habitual of folding the arm in an opposite way. Now it can be any opposite way. We can get it back or we can fold it in any other ways. And that required the efforts. Whereas in first step, we don't require any efforts. Now, what do we do early in the morning when we wake up? What is the first step? When we wake up early in the morning, what do we do? We open our eyes, we brush, we get ready for the school, we sit down and let the mind process. Okay, interesting, Ms. Zakia, thank you. But not most of them actually sit down and let their mind process. Usually, we are very automatic. We get up, okay, then we go to the washroom, we make breakfast for think about the whole day. That's good, Miss Raila. We think about the whole day. Now, whenever we recite namaz, okay, so we are thinking about the whole day. We are sitting and letting our mind process, and these habits are for the whole day and for every day. We do breakfast. We prepare breakfast for our family. And then we get ready for the school and we reach to the school. After reaching the school, what do? We read the students, we take the attendance, we write down date and time. Now, whatever steps or whatever activities we have discussed up till now, from waking up till reaching the school, are these our conscious decisions? Are we thinking before doing these activities? Before brushing our teeth, before breakfast, or before reciting the namaz, that okay, today I have to recite or not? Oh, okay, it's Fajr time today. Right now, I have to recite 2 rakat namaz. No, We are not taking decisions. These are automatic because these habits, these actions, because they are repeated in such daily routine that this becomes habitual. And the brain has automated it that okay, now we have to do this way. Our brain is not thinking for all these activities. So why do our brain automate so many things? So many activities we have actually counted up till now, just from waking up and reaching to the school. So why? Why our brains automate so many activities? Why we are not thinking before doing anything? Because it's our daily practice in our daily routine. Our brain weight is only 2% of our body weight. Okay? It is taking a small space in our body, but it is using a huge energy from our body, 20%. And if in this 20% brain activities, if we start thinking about small habitual stuffs, our brains are going to drain. It gets exhausted, it gets tired. And then what happens to save time? Because if we are going to think of such daily routine activities, we are going to get tired. The brain is going to get tired and it will take so long. For example, I'm giving you an example. We are tying the lace of a shoes. So we are habitual tying the knot and we do it quickly.
Whereas if we compare with this younger child, younger boy or girl, if he or she is tying the lace, what do you feel? उन्हें टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। बट जब वो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है देन दे टायर्ड क्विकली। तो अगर हम हर एक्टिविटी से पहले इतना सोचेंगे तो वो सारी एक्टिविटीज इतना ज़्यादा टाइम लेंगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, हमें अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना है। क्यों बचाना है? ताकि हम जो मैटर्स, जो चीज़ें एक्चुअली फोकस करने के लिए हैं, हम उन पे फोकस कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ताकि हम अपने ब्रेन को एफिशिएंटली यूज कर सकें। ठीक है, हम अपने, जो टीचर्स वर्क हार्ड तो करती हैं बट एफिशिएंटली नहीं करती, इसी तरह हमें हमारे ब्रेन्स को वर्क हार्ड नहीं करवाना, हमें अपने ब्रेन्स को एफिशिएंटली वेट करवाना। सो इस नाउ ऑटो पायलटिंग, this model in the science term is called the default mode network. What it is called? The default mode network. हमारा ब्रेन कभी भी इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ कि हम इतनी छोटी छोटी डिसीजंस के लिए जो है वो सोचें कोई भी काम करने से पहले। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास साइंटिफिकली दो थ्योरीज आती हैं, द ओल्ड थ्योरी ऑफ द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एंड द न्यू थ्योरी। जो ओल्ड थ्योरी है वो ये कहते हैं कि ब्रेन जो है हमारा रेस्ट मोड पे चला जाता है। मतलब जब मैं डेली रूटीन के काम कर रही हूँ, तो बिकॉज आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट पेइंग अटेंशन एट दैट एक्टिविटी, तो मेरा दिमाग जो है वो उस वक्त काम नहीं कर रहा, वो रेस्ट कर रहा है। वेयर एज जो न्यूरो साइंस की थ्योरी है, रिसर्चर्स है, वो कहते हैं नहीं, ब्रेन कभी भी रेस्ट मोड पे नहीं जा सकता। वो एक्चुअली पुराने पैटर्न्स, पुराने एक्सपीरियंस से जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और हम वो काम कर लेते हैं। बिकॉज इवेंचुअली वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर वी आर, माई हैंड्स आर मूविंग, इट इज बिकॉज द कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। But because I'm habitual while talking, moving my hands. So right now I'm not thinking, okay, I have to move my hand like this or like this. So there are two theories of default mode network. Now, how we are using this autopiloting and default mode network in our classrooms? Have you ever? Now here you need to interact with me. You enter the classroom, you have delivered the concept, the lecture, and then in the end, you ask, does everyone understand? And the class says, yes, miss. And what happened? How do we react then? When the class says, okay, okay, miss, done. We have understood. What do we do? Anyone? You get happy. Okay. What else? Yes, Fatma. Yes, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू Walaikum फॉर assalam. गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, हम जब लेसन दे रहे होते हैं ना, उसका रैप अप हम कर रहे होते हैं, तो जैसे क्लास में हम कहते हैं ओके नाउ यू गॉट इट व्हाट वी लर्न टुडे, तो वो आंसर देते हैं यस मैम, यस मिस, वी डन इट। तो फिर हम उसको ना असेस कर रहे होते हैं कि इधर दे अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉट देम, और वो बस सारे बच्चे एक साथ ही बोल रहे होते हैं ओके यस मिस डन। तो हम फिर असेस कर रहे होते हैं थ्रू रैप अप के थ्रू, क्वेश्चन आंसर होते हैं, या कोई एग्जिट टिकट के थ्रू कर रहे होते हैं, या कोई 1 मिनट पेपर, इस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं उसको। Best. Very good. Very nice. Thank you. Okay. Anyone else? Okay. We normally consider it true. Okay. And we start with the next lecture, or we give them easy questions regarding the lecture. Okay. We start the next lecture. You got satisfied. Okay. Ms. Hena, you would like to say something? Okay. So, whatever we all have said, we start the new lecture or we take assess them through exit tickets. Are these our decisions or these are our habits? Like the exit ticket strategy is very super. But again, is it our habit or is it our decision? We are deciding
that we have to take the exit ticket and in which way. Okay, today I'm going to ask another question. Yesterday I have taken the exit ticket in another form. Are we taking this as a decision or as a habit? Habit. Yes, we are doing this as a habit. Now, Sometimes one it's more. in our lesson Yes. plan. That's why. Okay, sometimes it's in We our have lesson followed the way plan. we followed our lesson plans. That's why. Okay, good answer. ठीक है, we follow. So again, why we are following the lesson plan? Because we are habitual of following the ठीक है? Yes, We are not exactly. deciding actually कि अच्छा जो lesson plan में लिखा हुआ है वो सही भी है या नहीं है. But because we are habitual of it, so we are doing it. Very good. Nice. One more example. We have two students, and those two students are coming up with their incomplete homework in the class. But there is difference between two students. First student usually performs good. He or she is a position holder or good performer. But the second child is a struggler. But both are coming with their incomplete homework. How you are going to deal with these two students? Anyone? Yes. We will ask the question first of all. Then why you not complete your homework? From both of them or from anyone? Yes. Treat both of them fairly and ask them, will politely, when one who complains indefinitely, will ask politely with the one who is a good performer and who is a struggler. The same pattern, figure out the reason. Okay. Anyone who would like to speak on how you are going to deal with both of them? Figure out the reason from both of them. Okay. I'm happy that I'm getting these responses. What we are going to do from the good performer, we are going to ask the reason that okay बेटा क्या हुआ आप तो कभी ऐसे नहीं करते हैं आज क्यों होमवर्क इनकम्प्लीट रह गया और जो स्ट्रगलर है उनको तो हम डांटेंगे देखा मुझे तो पता था आज भी आप होमवर्क करके नहीं आएंगे हमेशा की तरह आपके होमवर्क इनकम्प्लीट है यूजुअली हम टीचर्स का जो है वो रिएक्शन इस तरह का होता है सिट बोथ ऑफ देम टुगेदर ठीक है हम दोनों के साथ बैठ के उनसे बात करेंगे वेरी गुड बट अगर हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं हम दोनों को डिफरेंट तरीकों से डील कर रहे हैं यूजुअली तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे एक्शन पे इम्पैक्ट कर रही है दोनों से हमारा एक्शन जो है वो चेंज है क्या इनकम्प्लीट वर्क ने हमारा इन्फ्लुएंस किया कि भाई मुझे गुड परफॉर्मर से इस तरह से बिहेव करना है और स्ट्रगलर से इस तरह से बिहेव करना है नहीं क्योंकि वर्क तो दोनों का इनकम्प्लीट था क्या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस इस तरह का कुछ है कि हमें इससे इस तरह से बात करनी है इससे इस तरह से बात करनी है या फिर हमारे ब्रेन ने रिकग्नाइज किए हुए पैटर्न्स इस बच्चे के साथ मुझे इस तरह से ही बिहेव करना है और स्ट्रगलर के साथ मुझे इसी तरह से बिहेव करना है मुझे उसके साथ फर्म ही होना है और गुड परफॉर्मर के साथ मुझे अच्छे से बात करना है या फिर व्हाट हैपेंस बिकॉज समटाइम्स वी परसीव द पैटर्न बिल्कुल कि गुड स्टूडेंट कांट डू रॉन्ग एनीथिंग जब हम क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं अगर हमारा कोई गुड परफॉर्मर किसी दोस्त से बात कर रहा होता है तो हम उससे ज्यादा डांट के बात नहीं करते लेकिन जब हमारा स्ट्रगलर किसी से कान में कुछ कह रहा होता है हमारे लेक्चर के दौरान तो हम बस उनको फौरन डांटना शुरू कर देते हैं अब आप सुन नहीं रहे हैं फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे फिर आप काम नहीं कर सकेंगे हम उनको
डांटना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में पैटर्न बना हुआ है, हमारा प्री हमने जो है परसीव किए हुए हैं बच्चों के लिए अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस। समटाइम्स बच्चे हमारे दो बच्चे हैं क्लासरूम में, एक बच्चा हमेशा गंदे कपड़ों में आता है, एक बच्चा अच्छे कपड़ों में आता है, यूनिफॉर्म नीट एंड टाइडी, हेयर स्टाइल। हम क्या परसीव करते हैं कि जो अच्छे अटायर में आया है वो स्मार्ट होगा, और जो बुरे अटायर में आया है वो कैसा होगा? वो स्ट्रगलर होगा। बिकॉज हमारे दिमागों में एक नोशन बने हुए हैं, और हम उनको देखकर अपने जजमेंट्स और पैटर्न्स डिसाइड कर लेते हैं। नाउ, हैविंग सेड दैट, हमने ऑटो पायलटिंग की बात की कि भाई ऑटो पायलटिंग बहुत ज़रूरी है। हम हर चीज़ में सोच नहीं सकते हैं, डिसीजन कुछ हमें जो है वो क्विक डिसीजंस लेने होते हैं जो हम विदाउट सोचे समझे ले रहे होते हैं हमारे दिमाग के पैटर्न्स के हिसाब से। बट नाउ व्हेन डिस्कसिंग these ऑटो पायलटिंग decisions in our classroom, is autopilot good or bad? What do you think? Sometimes good. Okay, it is sometimes good. What else? Anyone else? जी मिस सीमा। कांट डिनाई द फैक्ट कि हम ऑटो पायलट हो, लेकिन अगर हम ग्रेजुअली अपने आप को ठीक करें तो हमारा जो बिहेवियर है उन दोनों के साथ फिर थोड़ा सा हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे उसको। जरूरी नहीं है कि अगर कोई स्ट्रगलर जो है वो वर्क नहीं करके आया तो वो अपनी बुरी आदत की वजह से ही नहीं करके आया। तो ये देखेंगे हम जरूर कि फिर के रीजन क्या है कि वो जो है वो होमवर्क नहीं करके आता। क्या ठीक है। इसका ही कसूर है या कोई और फैक्टर है जिसका कसूर वेरी नाइस, थैंक यू। Miss Fatima is also raising her hand. She wants to speak. यस, Yes. यस। आई फील ऑटो पायलटिंग, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि कुछ डिसीजन होते हैं या कुछ हैबिट्स बन जाती हैं, तो हम्म। मुझे ऐसे लग रहा है कि सम टाइम इट्स गुड फॉर अस, इट सेव आवर मेंटल एनर्जी। लाइक वी आर गोइंग समवेयर डेली, हम रूटीन में हम्म। जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कहीं मार्केट जाना है, तो हम कोई ऐसा रूट ले लेते हैं जो हमें बहुत कन्वीनियंट और इजी लग रहा होता है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उस चीज़ के लिए ये बेटर ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं हो रही, और मतलब एक प्रोसेस नहीं चल रहा होता है कि अच्छा ये कर लें या वो कर लें। तो सम टाइम कुछ चीज़ों में ऑटो पायलटिंग सेव आवर मेंटल एनर्जी, आई फील दैट थिंग। Okay. Very nice. सम टाइम So, कुछ जी। अच्छा भी, हाँ, सम टाइम कुछ पैटर्न्स पे ही हम चलते रहते हैं, तो मे बी बोर हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है। ठीक है, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू। Welcome. So, have mixed responses. It is good, it is bad. But one response I have received from Miss Mary that it is good, but it needs to be adjusted wherever required. जैसे अभी हमने बात की कि हम हर चीज में जो है वो अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। सो इट इज नीदर गुड, इट इज बैड, नॉट बैड, इट इज अ टूल, इट इज अ प्रोसेस, इट इज हेल्पफुल जो हमारे रूटीन टास्क है। जैसे अभी मिस फातिमा ने भी बताया, हमारी मेंटल एनर्जी सेव होती है। रिस्की कब है? जब हम अजम्पशंस बना रहे हैं, जब हम किसी के बारे में डिसीजंस ले रहे हैं, या कोई न्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या अगर हमारे रूटीन के ही टास्क हैं, छोटी छोटी क्लासरूम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, बट उसके कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हैं और हमारा हैबिट्स जो है वो पुराने ट्रेडिशन मेथड्स पे बेस्ड है, तो हियर इट इज रिस्की। अब हमारा गोल क्या होना चाहिए? क्या हमें अपने ऑटो पायलटिंग मोड को बंद कर देना चाहिए? नहीं। जैसे अभी उन्होंने कहा, मिस मैविश का मैसेज जो चैट बॉक्स में, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कब अपने माइंड का कंट्रोल हमारे हाथ में लेना है और कब उसको ऑटो पायलटिंग पे रन करने देना है। जैसे हमारी ऑटोमेटिक कार्स होती हैं,
वी नो उसमें हमारी एनर्जी भी सेव हो रही होती है, वो थोड़ी फास्ट भी होती हैं, बट वी नो कि कितना उसमें हमने ऑटोमेटिक रखना है और कितना कंट्रोल हमारे हाथों में होना। सो सेम इज विद आवर ब्रेन्स ऑल्सो। ऑल्सो वी आर गोइंग टू लीन कि हम ऑटो पायलटिंग को भी रीमेक कर सकते हैं। हाउ? हमारा डिसीजन मेकिंग का चेन क्या होता है? टीचर ने एक बिहेवियर चेक किया, फिर उसके फेमिलियर पैटर्न्स रिपीट हुए। फॉर एग्जाम्पल लाइक होमवर्क ऑल्सो, एक बच्चे के साथ इनकम्प्लीट होमवर्क हुआ, उसी के साथ नेक्स्ट टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, वो बिहेवियर ब्रेन रिकग्नाइज कर रहा है उस बच्चे के साथ। मल्टीपल टाइम्स होने के बाद ब्रेन ऑटो पायलट हो गया, उसे पता चल गया कि अब हमें इस बच्चे के साथ इसी तरह से डील करना है। अब जब इंसिडेंट हुआ, आज सुबह बच्चा क्लास में आया इनकम्प्लीट होमवर्क के साथ, टीचर ने रिएक्ट किया, बच्चे ने उस चीज को उसी तरह रिस्पॉन्ड किया, कॉपी फेंक दी, कुछ कर दिया टीचर के गुस्से होने पर। और टीचर ने क्या कहा? टीचर का वो बिलीफ स्ट्रॉन्गर हो गया कि देखा, मैंने तो ठीक किया, ये तो है ही बदतमीज बच्चा, या ये तो है ही आ, नहीं सुनता बच्चा। अब इस साइकिल में आप मुझे बताएं कि हमें कहाँ इंटरप्ट करना चाहिए, साइकिल को ब्रेक करना चाहिए, और हम जो है इस साइकिल को रीमेक करें ताकि वो एक गुड साइकिल ऑटो पायलटिंग की बन सके। Although it's written on the screen right now, but if anyone want to share कि हमें कहाँ अपने साइकिल को ब्रेक करना है। यस, एनीवन? ओके, हम ऑलरेडी ऑटो पायलट पे ही प्रोसेस कर रहे होते हैं सम टाइम। हम्म। एज अर्ली ईयर की अगर मैं बात करूँ या टीचर एज अ टीचर मैं बात करूँ, तो यस हम लोग ये चीज़ें देख रहे होते हैं खुद में भी दूसरों में भी। बट हम कब खुद को जज कर सकते हैं कि ये हम ऑटो पायलटिंग हैबिट के थ्रू हो रही है या हम ये डिसीजन ले रहे हैं, वो कहाँ हम खुद को कहाँ जज करेंगे? हम्म। तो अब फॉर एग्जांपल क्लास में एक इंसिडेंट हुआ, जैसे मैंने आपको अभी इनकम्प्लीट होमवर्क की बात बताई, या फॉर एग्जांपल हम लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे ने जो है बात की अपने पेयर से, अपने फ्रेंड से। अब बिकॉज उस बच्चे का बिहेवियर के साथ या उस बच्चे के साथ रिएक्ट कैसे करना है वो टीचर के माइंड में ऑटो पायलट हुआ हुआ है। अब ये एक्शन हुआ बच्चे का, अब टीचर ने क्या रिस्पॉन्ड किया? टीचर ने उसको डांट दिया कि तुम अभी सुन नहीं रहे हो, फिर तुम काम भी नहीं करोगे, काम टाइम पे नहीं करके दोगे। टीचर का ये रिएक्शन आया, बच्चे ने अगेन काम टाइम पे नहीं किया, और टीचर ने क्या कहा? बिकॉज तुमने सुना नहीं था तो तुमने काम टाइम पे नहीं किया। अब ये तो है एक ऑटो पायलटिंग की साइकिल। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ मुझे कहाँ ब्रेक देना चाहिए, और मैं ये सोचूं मुझे इस साइकिल को किस तरह से चेंज करना चाहिए। जो आपका सवाल है वो इसी बात के जवाब में है। ऑटो पायलटिंग, मेरे ब्रेन ने कहा कि मुझे बच्चे को जो है वो डांटना है, लेकिन डांटने से पहले, मेरे कोई भी रिएक्शन से पहले, मैंने 1 मिनट लिया, डीप ब्रीथ ली, और मैंने सोचा कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है ना, बिटवीन प्रोटेक्शन, टीचर का रिफ्लेक्शन, अगर 1 सेकंड के लिए भी मैंने पॉज लिया और मैंने कहा हर बार तो मैं इसको डांटती हूँ, इस बार प्यार से पूछ लेती हूँ, क्या हुआ बेटा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे पूछो, मैं आपको वापस समझा देती हूँ। मैंने पॉज लिया, मैंने रिफ्लेक्ट किया अपने बिहेवियर पे, और मैंने अपना बिहेवियर चेंज किया। इस जगह से मेरे इनविजिबल डिसीजन चेन की साइकिल चेंज होगी। ऑटो पायलटिंग मोड से मैंने रिफ्लेक्ट किया, रिकग्नाइज किया, मैंने अपनी साइकिल को इंटरप्ट किया, और मैंने न्यू बिहेवियर को रिप्लेस किया अपने पुराने बिहेवियर के साथ। अब मैं इस साइकिल को रिपीट करती रहूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे वो बच्चा जो है वो बाल बनाकर नहीं आया,
ये शूज पॉलिश नहीं थे। अगेन मैंने गुस्सा करने से पहले, रिएक्शन देने से पहले रिकग्नाइज किया अपने एक्शन को, इंटरप्ट किया, थोड़ी देर पॉज किया, और मैंने अपना न्यू बिहेवियर बनाया कि अब मैं उससे पूछूंगी क्या हुआ बेटा, घर पे सब खैरियत है, क्यों आज शूज पॉलिश नहीं हुए, या क्या रास्ते में जो है कोई प्रॉब्लम हो गई थी, रास्ते में क्या आपके शूज खराब हो गए, क्या प्रॉब्लम है। तो जब मैंने अपने बिहेवियर में रिप्लेसमेंट लाई, न्यू बिहेवियर को पुराने बिहेवियर के साथ रिफ्लेक्ट किया, अगेन एंड अगेन मेरी ये प्रैक्टिस रही, तो मेरा न्यू ऑटो पायलट रेट हो जाएगा। अब मुझे ये जहन में हो जाएगा कि अब मुझे हर सिचुएशन में उसको एनालाइज प्रॉपरली करना है, और प्री नोशन या प्री जजमेंट्स, अजम्पशंस ऑफ पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं रखने अपने माइंड में। मुझे अपना माइंड चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज करना है। सो व्हाट विल बी माई न्यू साइकिल, मैंने एक्सपीरियंस किया, वो हैबिट बनी, ऑटो पायलटिंग हो रही है मेरे माइंड में कि मुझे इस तरह से रिएक्ट करना है, लेकिन उससे पहले, उसके बाद फौरन मैंने रिफ्लेक्ट किया। फिर जो मेरी प्रैक्टिस है, जो मेरा बिहेवियर है, अब वो मेरा इंटेंशनल बिहेवियर है कि मुझे उससे पोलाइटली सवाल करना है। ये चीज रिपीट होती रहेगी, मेरा बेटर ऑटो पायलट क्रिएट होता जाएगा, और बेटर टीचिंग डिसीजंस मेरे पास आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा किसी दिन कोई क्लास में जो है वो लेसन प्लान, अभी बात हुई थी लेसन प्लान की, लेसन प्लान नहीं चला, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया, बच्चों को बहुत डल बैठे हुए थे, कोई नहीं जवाब आ रहा था। क्या क्या इंस्टेड मैं बच्चों को डांटना शुरू कर दूं, भाई आप जवाब नहीं देते, आप ये नहीं करते हैं, आप सुनते नहीं हैं। मैंने ऑटो पायलटिंग में रिफ्लेक्शन लाई अपने ब्रेन में, इंटेंशनल प्रैक्टिस लाई कि चलें अभी हम गेम खेलने चलते हैं बाहर गार्डन में, इंटेंशनल डिसीजन लिया। जब मेरे ये इंटेंशनल डिसीजंस आते रहेंगे, सो वी विल चेंज द स्ट्रैटेजी। गुड। तो अब जो पॉजिटिव ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं ना कि वी विल चेंज द स्ट्रैटेजी, ये हम दोनों बच्चों को जिन्होंने इनकम्प्लीट होमवर्क किया हुआ था, हम उनसे सवाल करेंगे। सो दे हैव क्रिएटेड देयर न्यू ऑटो पायलट, उन्होंने अपने ब्रेन सेट्स को न्यू फॉर्मेट पे, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेट पे ट्रेन कर दिया, पैटर्न कर दिया, तो अब उनका ब्रेन उस तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन जो टीचर्स अभी तक प्री असम्पशंस के साथ बच्चों के साथ जजमेंट्स करती हैं या डिसीजंस लेती हैं क्लासरूम्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ये चीज इफेक्ट करती है, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट पे जा रहे होते हैं, जब हम एनेक्डोटल डॉटल्स रिकॉर्ड्स लिख रहे होते हैं कि अच्छा आज बच्चे ने ग्रुप वर्क में परफॉर्म किया, इस बच्चे ने लड़ाई की, ये बच्चा तो कभी नहीं करता ग्रुप में परफॉर्म, ये खामोशी से बैठा रहता है, आज भी ये खामोशी से ही बैठा रहा। इंस्टेड मैं उससे जाके पूछती, उससे पूछती आपको ये ग्रुप में मजा नहीं आ रहा, क्यों, क्या आपको इस टास्क में मजा नहीं आ रहा। सो हियर कम्स माय न्यू ऑटो पायलटिंग, एंड दिस इज माय ग्रोथ साइकिल, कि मैंने रिफ्लेक्ट किया और अब अपनी चॉइस से इंटेंशनल डिसीजंस लिया। सो नाउ आर यू रेडी फॉर वन रिफ्लेक्शन एक्टिविटी? Yes or no? Can you show me thumbs up? Yes, okay. Okay. So now I'm going to send you in breakout rooms, and I'm going to share one Padlet link. I'm going to share it on the WhatsApp group also and in this chat box also. You have to fill that form, Padlet. वहाँ तीन चार क्वेश्चंस हैं. This is actually the reflection. किसी ने कहा था एग्जिट टिकट लेते हैं हम क्लास में एंड में, सो दिस इज एक्चुअली द एग्जिट टिकट. दिस यू हैव टू डू इट इन द ब्रेकआउट रूम्स. द रीजन सेंडिंग यू इन द ब्रेकआउट रूम्स इज टू लर्न विथ योर peers ऑल्सो. अगर किसी को कोई चीज जो मेरी बात है वो समझ नहीं आई हो, तो यू कुड हैव डिस्कस विथ योर peers, बट मेक श्योर यू हैव टू फिल इट individually and you have to mention your name. The reason of
mentioning your name is, then your certificates will be based on your these reflective activity. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाई थी बट दे आर नॉट अटेंडिंग द कोर्स ऑल्दो आई हैव नोटेड डाउन द नेम्स बट स्टिल आई वांट द नेम्स in this reflective activity. So are you ready? Should I send you in the breakout rooms? Okay. So you will be getting a dialog box and you have to click on join. You need to join the breakout rooms to have the discussion. If anyone is having the difficulty, so let me know. Few of them are still here. So, teachers, are we working on the Padlet link? I have shared it on the WhatsApp group. I have shared it in the chat box also. I hope teachers are having the discussion. I hope teachers are having their discussion because I haven't received any response up till now. I hope you people are doing the discussion and filling out the Padlet. I have received only 2 responses.
I will request Miss Usma, Dr. Nausheen, Miss Nadia, Miss Roxana to please join the rooms. And if you are facing any difficulty, please let me know. Okay, so I have got few responses and few are still. You people can do it after this session also, but make sure to fill this. Okay, so we are going to end up here with one more short takeaway that experience creates expertise and reflection
Okay, so we are going to wind up with one final takeaway, that experience is important because it is giving us the expertise. But reflection prevents those expertise to become routines. For example, if the exit ticket is the new methodology, but again, if we are doing it in a routine, so again, it's of no use. So we need reflection. The best teachers aren't those who are not using their autopilot, but they are the ones who knows when to take the control from the autopilot. So, in the end, I want, if anyone have any questions, anything they would like to say, you can speak up. What just happened? I stayed there in the broadcast up in the room, and I'm just coming here and I'm seeing that you people have already taken the test. Which test? Whatever the link is sending you to autopiloting brain, how hitting mental shortcut shape your teaching. There are some I mean, what is it like? I stayed there in the room, by the way, and Oh, then okay. as soon as the time finished, I am like sent back here. Yes, What happened during that time? during the breakout rooms, you actually Yeah. have to discuss with your friends over there, with different teachers, if you people have any ambiguities, or you have to fill that form. That okay, what do you think, that how you are going to change one behavior now? What you are going to, what you were doing it previously. So that questions you have to discuss it with your friends. Where is the We form? form we have shared it on the chat box also and in the WhatsApp group also. It's So, the so Padlet. this link right here is the link for the form. Yes. So you can fill it at any time you want. Yes, you can fill it after the session till tonight. Oh, Okay. oh. Any more questions? मैम सेम हैपेंड विद मी। Hmm. आपने मुझे ब्रेकआउट रूम में जैसे ही मैं गई वहाँ पे वी हैवंट एनी डिस्कशन और मेरे ख्याल से कोई रेडी भी नहीं था। देन आई आस्क्ड समवन कि मुझे पर्सनली डीएम कर दें वो लिंक, फिर मेरे Hmm. पास आया और फिर मैंने उस पे ना It's या okay, no worries. Yes, I came to know. I visited different groups and I found out that there were no any discussions. So that's why I then dissolved the groups, because it was of then no use. So I dissolved the groups and I call you all in the main room. ओके So the Padlet link, you can fill it anytime till tonight, or you can take one more day tomorrow till tomorrow night, and then after that, inshallah, by Monday, you are going to get your certificates. Any other questions regarding the link or regarding the session? Anything, any feedback you would like to give? If none, then we thank you so much for joining, and it was a pleasure having a healthy discussion with you all. Although few people spoke up, but we had a healthy discussion on the chat box. You didn't receive any link yet. Miss Rahila, are you in the WhatsApp group? And I have also shared it over here also. I'm again sharing it. You can take the link is in the chat box also and in the WhatsApp group also. Thank you so much everyone for joining. Take care, Allah Hafiz, and have a good day. थैंक यू सो मच फॉर द नाइस सेशन। Thank you, ma'am. Allah Hafiz.